हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हमारे पास एक मदरबोर्ड है एप्पल एयर का 1466। इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मल्टीपल टैब्स अगर आप ओपन कर लेते हैं तो काफ़ी स्लो हो जाता है, फ्रीजिंग प्रॉब्लम आ रही है। इस फ्रीजिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस बोर्ड को ओपन कर लिया हम लोगों ने। बैक साइड से जब हम लोगों ने देखा है, देखिए इसको पूर्ण रूप से पहला रिपेयर करने का जो स्टेप है कि आपको बताया गया है कि पहले फिजिकल प्रॉब्लम को प्रॉपर देखिए और उसमें पूर्ण रूप से माइक्रोस्कोप का सपोर्ट लीजिए। विदाउट माइक्रोस्कोप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिजिकली रिजॉल्व नहीं की जा सकती। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स है तो कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं और इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं और हमें ट्रेसिंग के दौरान क्या मिलता है। फ़िलहाल ये बोर्ड का जब आप कवर ओपन करते हैं तो ये बैक साइड है। इस साइड पे अगर फिज़िकल के लिए देखें तो कोई भी ऐसा लिक्विड डैमेज और कोई भी लिक्विड डैमेज इधर नहीं दिखता है। आपका ये जो लिक्विड के मार्क के लिए होता है इंडिकेटर, वो रेड कलर नहीं है, इसका मतलब कोई लिक्विड डैमेज नहीं है। फिर भी जनरली जब भी लैपटॉप यूज़ करते समय फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर हमने एक्सपीरियंस किया है कि मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम आती है। मेमोरी एरिया या सीपीयू के बैक साइड वाले एरिया में मॉइस्चर प्रॉब्लम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आ रही होती है। जब बैक साइड पे तो पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपीयू का सेक्शन है और हार्ड ड्राइव के एरिया पे, हार्ड ड्राइव के ऊपर भी कोई मॉइस्चर नहीं है। हार्ड ड्राइव की भी सारी स्टेटस जो है कंपोनेंट्स की प्रॉपर है। ठीक है, अब बैक साइड इसको चेक करते हैं वन साइड से, एक साइड से शुरू करते हैं दोबारा। और इस साइड पे साथ के साथ एसएमसी के पास बहुत ही केयरफुली देख लेना चाहिए। एसएमसी के पास कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम मिलती है मॉइस्चर का तो वो रीज़न हो सकता है। और क्रिस्टल वाले एरिया, जितने भी क्रिस्टल वाले एरिया होते हैं, अगर क्लॉक और डेटा के एरिया पे थोड़ा सा भी डस्ट होता है, मॉइस्चर का होता है, तो आपका सिस्टम इस तरह की प्रॉब्लम करता है। अब ये पूरे बोर्ड को हमने देखिए 1 बाय 1 ये एरिया पूरा क्लियर है। ये चार्जिंग सेक्शन हो गया या 3-5 का सेक्शन हो गया। 3-5 की आईसी पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका एसएमसी के आसपास कोई भी मॉइस्चर नहीं है। बैक लाइट से रिलेटेड एरिया हो गया, ये भी पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केवल एक डॉट्स है जो आपका थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम बायोस वाले पोर्शन पे जा रहे होते हैं, देखिए कि हम बायोस वाले पोर्शन पे ये वाइट कलर का दिख रहा है पूरा, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि लिक्विड का हो, बट ये लिक्विड नहीं, मॉइस्चर की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। ये रीज़न बन सकता है आपका स्लो होने का। पहले ये पूरा एरिया हम क्लियर करेंगे। साथ के साथ आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर डैमेज दिख रहा और यहाँ पे ग्रीन कलर का कोरोजन। इस कैपेसिटर को हमें चेंज करना ही होगा। बिना चेंज किए आप वैसे क्लीन करें तो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपके पास स्क्रैप बोर्ड हो या डोनर बोर्ड हो, उससे आप इसको रिप्लेस करें। क्योंकि इस तरह का जब भी कोरोजन होता है या मॉइस्चर की वजह से डैमेज होता है तो कैपेसिटर की जो वैल्यू हो जाती है या जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, पहले आप इसको रिप्लेसमेंट के लिए ही जाइए। जो जो कंपोनेंट मुझे ख़राब लगेंगे उन सभी को मैं रिप्लेस करूँगा। एक बार मार्क कर लेता हूँ मार्कर से। मार्कर में जो मिला ही है, ये कैपेसिटर दिख रहा है, इस पूरे एरिया को मैं क्लीन करूँगा प्रॉपर अल्ट्रासोनिक क्लीनर की मदद से। और आप देख पा रहे हैं ये कैपेसिटर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इस पे मैंने मार्क कर दिया। चलो, और सबसे मेजर फॉल्ट इस कैपेसिटर की दिख पा रही है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ और ओके, ये कैपेसिटर को देखें अगर आप सही तरीके से, तो दो यहाँ पे इसके ऊपर वाला पोर्शन, इस साइड का कलर अलग है और इस साइड का कलर अलग है, दिख रहा है। ये मेजर इशूज है, इशू मतलब प्रॉब्लम है। ये कैपेसिटर ये अंदर से बर्न कर गया है। हमें इस वाली को रिप्लेस करना ही होगा। और ये इससे वजह से ये मतलब इस कैपेसिटर से ये कंफर्म हो गया 90% की ये प्रॉब्लम यहीं से प्रॉब्लम आ रही, जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इस कैपेसिटर को भी मैं चेंज करूँगा। और इस आईसी की सारी पिनें प्रॉपर होनी चाहिए, आप देख लीजिए।
चलिए आइए एक एक करके इसको, इस काम को अंजाम देते हैं, एक एक करके कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना शुरू करते हैं और देखते हैं फाइनली कि क्या हमें सक्सेस रिसीव होती है या नहीं। अगर इसके बावजूद नहीं होगा तब हम एसएमसी और प्रोग्रामिंग लेवल पे काम करेंगे। बायोस के एमई रीजन क्लीन करना, बायोस प्रोग्रामिंग पे जाएंगे और एसएमसी से रिलेटेड वर्क करेंगे। लेकिन 90% एश्योरिटी यहीं पर है कि ये प्रॉब्लम यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। हम इसे क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। बोर्ड, इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग।
कंपोनेंट लगाते समय ध्यान रखना है कि सही तरीके से लगे और इसके वजह से कोई दूसरे कंपोनेंट ना रिमूव हो। काम इस प्रकार से करना चाहिए, लगे बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहिए। आप लोगों को भी लग रहा होगा इजी है, क्यों नहीं लग रहा है? अब तो इतने आसानी से कर रहे हैं, अब भी नहीं इजी लग रहा। पहले देखा था कभी ऐसे काम होते हुए अपने लैपटॉप को खुल के? हाँ, आपके YouTube वीडियो देख के
एक बार इसकी फर्मवेयर को भी हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। फर्मवेयर के पास भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश कर लिए इसकी। ठीक है, इसको करते हैं। ये प्रोडक्ट से ये ड्राई हो गया है।
एप्पल का जब भी आप रिपेयर कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हाई क्वालिटी की जो कूलेंट पेस्ट होती है उसी का इस्तेमाल करें। जो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग से कूलर मास्टर की या इस तरह की अलग से स्पेशली पेस्ट आती हैं, उन पेस्ट का इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल हम लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज़ करते हैं, 100 रुपये की एक पूरी इंजेक्शन ही मिलती है, वो कूलिंग पेस्ट इस पर प्रॉपर वर्क नहीं करती है। सो आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा या सजेस्ट करना चाहूँगा कि हाई क्वालिटी का कूलिंग पेस्ट ही इस्तेमाल करें, वरना क्या होगा, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। उसमें से वो मैच कर रहा है ना, बैठ नहीं रहा है, उसमें काम कर रहा है, उसमें बैठाना पड़ेगा, उसमें बैठा दोगे तो फिर हो जाएगा। इसको दोबारा से असेंबल करते हैं। इसमें स्क्रू की पोजीशन पता होना चाहिए, कौन सी स्क्रू कहाँ लगते हैं। सेम साइज़ के सारे यहाँ इस साइड लगेंगे, लेकिन कुछ स्क्रू इस साइड छोटे लगते हैं, उस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा।
केबल को अक्सर लोग उल्टे लगाते हैं, इसको ऊपर से लगा, जैसे इस साइड से लगा के नीचे की तरफ ऐड करके तभी लगाना चाहिए, और इसके बाद फैन लास्ट में आप लगाओ। इसलिए इसको थोड़ा सा मेरे को पहले लगाना चाहिए था, एक स्टेप पहले, लेकिन कोई बात नहीं। खिड़की खोल दो, मैं पैक कर देता हूँ खिड़की। फैन में जो बड़े नॉब वाला स्क्रू होता है यहाँ पे लगता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं, सीधा रखो हमेशा, सीधा नहीं रखना।
यूपीएस केबल, टच पैड, लाइट, फैन, फ्लैक्स केबल, एक स्क्रू यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। एक भी स्क्रू मिस नहीं होना चाहिए आपसे। और अगर आप पैक करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपने खोल के पैक किया है। जिस प्रकार से कंपनी इफ़िशियंसी के साथ पैक करती है वो इफ़िशियंसी आपके हाथ में भी होनी चाहिए। पासवर्ड है अपनी ही वीडियो चला के देख लेता हूँ। आपको लग रहा होगा, देखिए भैया तो दिखा रहा होगा, देखिए भैया अपनी ही वीडियो लगा के चेक कर लेते हैं कि लोड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। चार्जिंग से रिलेटेड केस स्टडी था ये। इसमें चार्जिंग से रिलेटेड इशू था। कस्टमर ने एक पूरा प्रॉपर एक पेज का लव लेटर लिख के दिया है कि ये 2009 में खरीदा, उसके 1 साल बाद 2010 खत्म होते होते ये 11 में बैटरी रीड करना इसने छोड़ दिया। फिर उसने 1 साल डायरेक्ट चलाया, 2012 में नई बैटरी खरीदा। नई बैटरी लगाने के बावजूद भी क्या हो रही थी, ये जो रीड नहीं कर रहा था, यानी कि बैटरी मोड पे नहीं काम करता था, डायरेक्ट मोड पे काम करता था। 2015 में एक बार हमारी पुरानी ऑफिस में दिखाया था। तो बीच में ही अटैच हुआ था, उसके बाद वाला अलग था। क्या इसका मीटर भी ख़त्म हो जा रहा है मेरी स्पीड टेस्ट का। 100 से ऊपर इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। 300 Mbps शो कर रहा है।
चलो इंटेंसिव चेक कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद कस्टमर को हैंड ओवर किया जाएगा।